Hello guys, welcome back to my channel, and today I'll be talking about iCloud Plus and why iCloud Plus makes sense. Let me just show you how iCloud Plus works. So ये मेरा iPhone 13 है, so I'll go into the settings and then I'll go into iCloud, and the plan which I've taken is of 50 GB. I'll come into the pricing section later. So मेरे पास 50 GB है and I have used 7 GB. So let me just show you what I have used. So इसमें around 3.8 GB of photos है and 2.9 GB of backup. Let me just show you backup के अंदर होता क्या है. So what happens in backup is you can just select the apps जिसका data you want to be backed up. So like WhatsApp, and there are many other apps as well, such as Dashcam, and files. So hey, files के अंदर like you have your documents stored, but there are other apps as well like Hoji and Lightroom. Like for example like Hoji or Dashcam. So if I take a photo, वो फोटो क्लिक करने के बाद वो ऐप के अंदर सेव हो जाता है. It doesn't get saved to the photos. It backs up even the information of the app as well. ऐप का जो डेटा है वो भी बैकअप होता है iCloud के अंदर. बेसिकली इस बैकअप में एक और चीज है कि कल को तुम्हारा आईफोन घूम जाता है या तुम्हारा फोन डैमेज हो जाता है, सो इफ यू एंड अप बाइंग अ न्यू फोन, सो उसके अंदर यू कैन जस्ट रिट्रीव योर एंटायर फोन फ्रॉम दिस बैकअप. तुम्हारे एप्स का जो पोजीशन है, जहाँ तुम्हारे एप्स लगे हुए हैं, जो तुम्हारा वॉलपेपर है, तुम्हारे इवन द स्मॉलेस्ट सेटिंग, एवरी सिंगल थिंग विल बी स्टोर्ड, एंड वही चीज you can retrieve it again. And the other thing which takes up the storage is photos takes up around 3.8 GB, and the reason why I prefer iCloud over Google Photos is because if you go into the photos, ये जो setting है optimize iPhone storage, keep it on and choose this one only. This is because ये करता है क्या है कि जो तुम्हारे जो पुराने फोटोज है ना उनको डिलीट कर देता है ऑटोमेटिकली, और उसका एक लो रेजोल्यूशन इमेज वो फोटोज़ के अंदर रखता है. लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूँ, आई हैव ओनली 200 फोटोज़, तो मेरे फोटोज़ उतने पुराने नहीं है. बट अगर मेरा कोई फोटो है जो सपोज इफ देयर इज अ फोटो और अ वीडियो विच इज़ लाइक 3-4 महीने पुराना है या 4-5 महीने पुराना है, और मैंने बहुत समय से उस फोटो को क्लिक नहीं किया, मैंने ओपन नहीं किया है, तो वो करता क्या है कि उस फोटो को डिलीट कर देता है और एक लो क्वालिटी वाला इमेज, एक लो रेजोल्यूशन वाला इमेज वो फ़ोन के अंदर रखता है. सो द नेक्स्ट टाइम मैंने क्लिक ऑन दैट इमेज, वो लाइक 1 या 2 सेकंड लेगा और एक हाई रेजोल्यूशन इमेज ऑटोमेटिकली अपने आप डाउनलोड कर देगा और वो फोटो एकदम से क्लियर हो जाएगा. सो आई रियली लाइक दैट फीचर बिकॉज गूगल फोटोज़ के अंदर ये फीचर नहीं है. गूगल फोटोज़ तुम्हारे फ़ोन से डिलीट नहीं करेगा. इसके अंदर स्मार्टली डिलीट्स ऑल द फोटोज़ एंड मैनेजेस एवरी सिंगल थिंग. सो दैट थिंग मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है आई क्लाउड फोटोज़. And mainly the reason why I purchased iCloud Plus was because only because of photos. Because what happened was because 2 महीने पहले like my phone met with an accident actually. So I like the screen entirely got shattered, and it's a long story. It's a story for another day. But so all the I had to give up all of my data. So yeah, so that's the reason why I went with iCloud Plus. And so now let's go. So now let's head over to the computer and see what are the pricings. So basically iCloud Plus, there are like 3 versions: one with the 50 GB, 200 GB, and 2 TB. If we see the pricing is around India, yeah, India is 50 GB is for 75 rupees. So you might wonder, यार बहुत ज़्यादा होते हैं for 1 month, but economical and it's really cheap. The reason is because, so if we see the Google One pricing, they don't even have a 50 GB plan, it's of 100 GB, and it's 130 rupees per month. And here Apple is giving for 75 rupees. Yeah, Apple is giving 50 GB, but I guess 100 GB is a bit overkill, especially if you're using only for photos na, especially of these iPhones, they don't take much storage. They take around worst case 10 MB. Okay, अगर तुम ProRes के अंदर shoot करो and raw photos click करो on iPhone Pro models, okay, that's a different story. You know, and it's not only 50 GB, तुम्हारा फोन का 128 GB भी है. I feel 50 GB is the sweet spot and it's like the perfect pricing, 75 rupees for 50 GB is perfect. And 130 rupees, I don't feel like paying like 100 GB के लिए 130 rupees. So this is the only alternative which we have of iCloud, which is this. Starting के first 3 months के लिए 35 rupees है, but that's only for 3 months. Another reason why you might consider going with Google One is because 2 साल पहले तक गूगल फोटोज के अंदर तुम अनलिमिटेड फोटोज डाल सकते थे. सो माई मॉम शी यूजेस एन एंड्रॉइड फोन, एंड फॉर द पास्ट 8 years जितने भी फोटोज मेरे मॉम ने खींचे वो सारे फोटोज गूगल फोटोज के अंदर है. लाइक शी लव्स यूजिंग गूगल फोटोज बिकॉज द वे हाउ वो एवरी मॉर्निंग इट जनरेट्स एन memory and it shows a slideshow of all the old photos. And so you might consider going with Google Photos and Google One if तुम्हारे already बहुत सारे photos and you want to continue using the same platform. Then I always prefer buying base model iPhones, especially only the 128 GB ones,
is because it's really cheap and it may really make sense. Because if you see, if you do 75 rupees into 12, it's 900 rupees और 900 रुपए साल भर का है. You get 50 GB of storage and तुम फोन कितना ही चलाओगे, 3 साल 4 साल 5 साल 3 साल रहोगे, 2700 rupees. And if you want to buy an iPhone, जिसका storage is like higher, because usually 10,000 rupees का increment होता है, so it's like 80,000 rupees for 128 and 90,000 for 256. You're paying 10,000 rupees for 128 GB more, but kahan 10,000 rupees or kahan 2,700 rupees? So I feel iCloud really makes sense, and you should buy the base model version only and not the higher ones. That's my personal take. Another thing is, people might say, oh, what about privacy and all such things? I do it manually. I'd carry a hard drive and all such things. But once you start using it, your life becomes much easier and there's no way going back. It really makes sense for me to spend 75 rupees per month, and it really makes sense because 75 rupees, it's not a lot. Like, तुम एक बार बाहर जाके अगर तुम खाना खाते हो, एक बार मत खाओ. That's it, 75 rupees, you got it. So yeah, thank you for watching the video. Until next time, goodbye. Subscribe. Bye.